Hello viewers, the question is determine the current in each branch of the network shown in figure. So there is a circuit, there is a network which consists of a total of 6 resistors and some branches, and we have to find out the current in each branch. Now let us suppose the current in branch EA is I1, that is from C to F and F to E and F to and E to A. The current is I1. At the node A, the current is dividing in two parts. Let the current in part AB be I2. Then according to KCL, the current in branch AD is I1 minus I2. Now let the current in branch BD is I3. Then the current in branch BC is I2 minus I3 according to KCL. Let the current which is entering basically from this figure, when the current entering at node D, we see it is I1 minus I2 plus I3. So it means that from D to C, the current is I1 minus I2 plus I3. So this is the current in terms of variables which we have shown. Now we have to calculate the currents in each branch. So to calculate them, we have to apply the KVL in different loops. Now you can easily see that there are three unknowns, I1, I2 and I3. So it means that we require three equations to solve them. So we have to apply KVL in three different loops. For example, in first case, we apply the KVL in loop A, D, C, F, E, A. So that particular loop, for that particular loop, we have to write the KVL terms. So first of all, we have to write the term corresponding to AD branch, that is the 5 ohm resistor. So the voltage drop across it is 5 multiplied by I1 minus I2. This is the first term. Then in 10 ohm resistor, the current is I1 minus I2 plus I3. So we put this value here. Then current is entering at the negative end of the battery. So we put here minus 10. Then the current is entering in this 10 ohm resistor, which is I1 value. So it is 10 I1. And the whole loop is completed. So that's why this is equal to 0. After simplifying it in terms of I1, I2, I3, this comes out to be 5 I1 minus 3 I2 plus 2 I3 is equal to 2. This is equation number 1. Similarly, for the loop ABC, ABC, FEA, for this particular outer loop, we write the KVL equation, which is first of all for branch AB, the term is voltage term is 10 I2. Then for branch BC, the voltage term is 5 multiplied by I2 minus I3. Then the current is entering at the negative terminal of the battery, so that's why minus 10. Then the current is entering in the 10 ohm resistor, so that's why 10 I1. This is equal to 0. After simplification, this comes out to be 2 I1 plus 3 I2 minus I3 is equal to 2. Now applying the KVL in the loop A, B, D, A. Now this, for this particular loop, there is no energy source, no battery. So we write the term. For example, for AB branch, the term is 10 I2. This is the voltage term. Then for branch BD, the voltage term is 5 I3. And for branch DA, we have to write, this is important, from D to A, if we traverse the loop from D to A, then it means that we are going opposite to the direction of I1 minus I2. That's why we have chosen here a negative sign here. So minus bracket I1 minus I2 times 5. In this way, we get the equation in a simplified form, minus I1 plus 3I2 plus I3 is equal to 0. So in this way, we get three equations. Now these are the three simultaneous equations. You can solve them according to different methods. There are different methods. You can choose any one. I have chosen the Cramer's rule uh, to solve this problem. According to Cramer's rule, if we see the different equations, we can write the coefficient of I1 and I2 and I3 in terms of determinant. So that's why according to Cramer's rule, we write del. Del is basically the determinant of the coefficient of I1 and I2, I3 of the three equations. So after solving this determinant, this value comes out to be 51. Then we calculate delta 1. Delta 1 is obtained by this particular column. First column is replaced by the value in the right hand side of the equation. For example, the right hand side terms are this 2,
this 2 here and the 0 here. So we write the first column here as 2 to 0, and the rest of the term according to equation, like in this equation we can easily see that this is minus 3 second term, then here in the second equation is plus 3, then in the third equation this is plus 3. So we write this here as minus 3 3 3 and then 2 minus 1 1. So after solving this we get this value as 30, and similarly we calculate delta 2 as well as delta 3. After calculation of these determinants, we find out the current, respective current I1 and I2 and I3 as I1 is delta 1 by delta, which is 10 upon 17, I2 is equal to 12 upon 15, which is 4 upon 17, and I3 is equal to minus 2 upon 17. So the current in branch FE is I1 is equal to 10 upon 17 ampere. Current in branch AB is I2 is equal to 4 upon 17 ampere. Current in AD branch, which is I1 minus I2, after solving it, this value comes out to be 6 upon 17. Similarly, the current in branch BD is I3, which is minus 2 upon 17, which we have calculated. Current in BC branch is I2 minus I3, which is 6 upon 17, and current in DC branch is I1 minus I2 plus I3, which comes out to be minus 4 upon 17. In this way, we get the currents. So these are the answers of this problem. तो यहाँ एक प्रॉब्लम पूछी गई है, इसमें एक सर्किट दिया हुआ है, सर्किट में डिफरेंट ब्रांचेस हैं, अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 टोटल ब्रांचेस हैं, इन 6 के 6 ब्रांचेस में हमें करंट निकालनी है। यहाँ पे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू गिवन है, बैटरी की वैल्यू गिवन है, तो हमें यहाँ पे करंट्स को जो है अज्यूम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जो टोटल करंट है वो है I1, यानी बैटरी से जो सप्लाइड करंट है वो I1 है। फिर AB ब्रांच में करंट हमने I2 मानी, फिर हमने AD ब्रांच में करंट निकाल ली KCL से I1 माइनस I2, फिर उसके बाद हमने B से D की तरफ जाने वाली करंट को I3 कहा। तो उसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं KCL के अकॉर्डिंगली कि DC जो ब्रांच है उसमें करंट होगी I1 माइनस I2 प्लस I3, और KCL ही हमने नोड बी पे अगर अप्लाई किया तो हमें करंट बी से लेकर सी तक की जो करंट है पता लग जाती है I2 माइनस I3। इन करंट्स की नॉलेज के बाद हम जो है KVL अप्लाई करेंगे डिफरेंट लूप्स में। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं I1 I2 I3, तो हमें जो है 3 इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम KVL लगा लेते हैं, KVL एक पर्टिकुलर लूप चूज कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ADCFEA। इसमें हमने जो है KVL अप्लाई किया, KVL अप्लाई करके इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया हमने, तो इक्वेशन जो हमारी I1 I2 I3 के टर्म्स में आ गई 5I1 माइनस 3I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से हमने उसके बाद ABCFEA आउटर लूप में जो है KVL अप्लाई किया और इक्वेशन ऑब्टेन करी। उसके बाद हमने ABDA लूप में KVL अप्लाई किया, इक्वेशन यूज फॉर्म करी। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम जिस समय ABDA में KVL लगाएंगे तो करंट की डायरेक्शन ए से डी की तरफ शो की गई है I1 माइनस I2, लेकिन जो हम लूप फॉर्म कर रहे हैं वो डी से ए की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे एक नेगेटिव साइन रखना पड़ेगा, नेगेटिव I1 माइनस I2 टाइम्स 5। इसको सिंप्लीफाई करके हमने निकाला माइनस I1 प्लस 3I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। तो थर्ड इक्वेशन है। इन तीनों इक्वेशंस को जो है हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन से या और किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्रैमर रूल का यूज़ किया है क्योंकि ये एक रोबस्ट मेथड है, इससे हम आंसर तक इजीली पहुँच सकते हैं। क्रैमर रूल में हमें डिटर्मिनेंट्स निकालने होते हैं। सबसे पहले हमने जो इक्वेशन में I1 I2 I3 के कोफिशिएंट्स हैं उनको लिख के उनका डिटर्मिनेंट को उसको सॉल्व किया तो 51 आता है। फिर उसके बाद हमने फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया जो राइट हैंड साइड के टर्म्स हैं उनसे, और बाकी कॉलम्स को एज इट इज छोड़ा हमने, तो डेल्टा 1 निकला। उसके बाद डेल्टा 2 कैलकुलेट करने के लिए हमने जो कोफिशिएंट्स थे उसमें जो मिडिल कॉलम था उसको हमने रिप्लेस किया राइट हैंड साइड के कोफिशिएंट से, लाइक 2 to 0 से। इसी तरह से हमने डेल्टा 3 निकाला, जो लास्ट का कॉलम है उसमें हमने 2 to 0 पुट किया और बाकी के दोनों कॉलम्स को हमने एज इट इज छोड़ा, तो यहाँ से हमारा डेल्टा 3 निकला। फिर हम I1 निकालेंगे, I1 होगा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, I2 इज डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा एंड I3 इज डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद I1 की वैल्यू आती है 10 अपॉन 17, I2 की वैल्यू आती है 4 अपॉन 17 और I3 की वैल्यू आती है माइनस 2 अपॉन 17। इस तरह से हमारी 3 करंट निकल आई। अब हम डिफरेंट ब्रांचेस में करंट की अगर बात करें, FE ब्रांच में करंट होगी I1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 17, AB ब्रांच में करंट होगी I2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 17 और AD ब्रांच में करंट होगी I1 माइनस I2 यानी कि 6 अपॉन 17। इसी तरह से BD ब्रांच में करंट I3 होगी माइनस 2 अपॉन 17, BC ब्रांच में करंट होगी I2 माइनस I3 विच इज 6 अपॉन 17 और DC ब्रांच में करंट होगी I1 माइनस I2 प्लस I3, वैल्यूज पुट करने के बाद ये आती है माइनस 4 अपॉन 17। So these are the different current in different branches. So these are the answers of this problem. So hope you understand the explanation. Thank you.